Sir, I've sent it to you. Did you get it? I got it. I got 3 images. ठीक है, कुछ डिस्कस करना है इसमें तो बताइए। tell me, do you want to discuss anything? Sir? Yeah, tell me. No, sir. कुछ नहीं, सारा आता है No, आपको। because in the class they already discussed the whole paper. अच्छा अच्छा, हम लोग डिस्कस कर दिया है। ठीक। Yeah. एनसीईआरटी के ही, बट योर क्वेश्चन पेपर इज गुड बाय द वे, मतलब वी हैव इट इज अ वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चन पेपर। उन्होंने इस सब चीज का ध्यान रखा है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक बोर्ड में जिस तरह से सवाल आते हैं ना 12th के स्टैंडर्ड में, that they always give the molar mass. For example, potassium का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मोलर मास दिया है आपको, है ना, कैल्शियम का मोलर मास आपको को दिया हुआ है। तो दिस इज रियली गुड थिंग, है ना। जो पेज नंबर तो नहीं, सेक्शन डी में है। सेक्शन ई से जस्ट पहले एक सवाल है, डेंसिटी ऑफ की मोलर सोल्यूशन ऑफ एनी सीरीज 1.25 ग्राम पर एमएल, कैलकुलेट द मोलालिटी। ये वाला सवाल एनसीईआरटी में एग्जैक्टली है, शायद हमने कराया हो आप लोगों को, पर शायद कराया हो, no, necessary, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट आई कैन रियली डू। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, हाउ टू गो फ्रॉम मोलारिटी टू मोलारिटी, वो कराते हैं हम। ठीक है, जैसे ये चीज है, एम इज इक्वल टू एम इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू एम डी। ठीक है, तो ये सवाल है। हाँ, ये सवाल कराया हुआ है, देखिए द क्वेश्चन, ये सवाल था ना जैनब। यू गॉट 4 मार्क्स फॉर दैट। Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं periodic प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर इट इज नाउ ओवर। आप उसमें जितने भी सवाल है आप उन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट लेट मी जस्ट कंफर्म दिस। अगर हम नोट देखे थे, हमको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ शायद हमको लास्ट क्लास में ध्यान आया था कि आपको ना कुछ एक कोई फॉर्मूला हम बताना भूल चुके हैं। तो हम देख लेते हैं सब कुछ कराया था कि नहीं, उसके बाद फिर आपको हम आगे बढ़ाते हैं। एक फॉर्मूला रह गया था, ठीक है, छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम itself। ये आपके पास दिखेगा नंबर ऑफ emission, ठीक है, नंबर ऑफ emission, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ emission लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिख लीजिए उसको समझाते हैं, emission lines that is given by an electron transitioning from transitioning from N2 to N1, N2 to N1 is given by, क्या है मैक्सिमम नंबर, ये आपके एक फॉर्मूला आता है, दैट इज N2 minus N1 multiplied by N2 minus N1 plus 1 equals number 1 है। this thing will be whole divided by 2। क्या मतलब है इसका, लेट्स सपोज आपके पास है एक
1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। नाउ योर इलेक्ट्रॉन इज इन द सेवेंथ लेवल। अब उसके बाद 7 से 1 आना है इसको। देयर आर मल्टीपल पाथवेज। ठीक है ना। फिर ये ऐसे आए, 7 से 6 आए पहले, फिर 6 से 5 आए, फिर 5 से 4, फिर 4 से कैसे आए, 3 आए, फिर 3 से 2 आए, फिर 2 से फिर 1 आए। ऐसे हो सकता है। अदरवाइज इट कैन हैव अनदर पाथवे, 7 से सीधा आ जाए 6। ठीक है। अब उसके बाद बाकी सेम है, या फिर वो 6 से सीधा 4 आ जाए। ठीक है। तो देर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन दैट कैन बी फॉर्म। उसके लिए एक फॉर्मुला है, लाइक यू कैनॉट रियली डू इट मैनुअली। उसके लिए एक फॉर्मुला दैट n2 माइनस n1। ये मैथमेटिक्स आया, देर इज अ चैप्टर इन मैथमेटिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप ये फॉर्मुला निकाल सकते हैं। इसको बस लिख लीजिए। आई थिंक ऐसा सवाल शायद लास्ट टेस्ट में होगा, like, जो आफ्टर क्लास असेसमेंट होती है ना, उसमें शायद होगा। By the way, अच्छा शाइमा, कैन यू शेयर योर पेपर? शाइमा, शाइमा कैन यू शेयर योर पेपर? Sir, which paper? आपका जिसमें मार्क्स आए 29 मार्क्स जिसमें आए थे वो वाला, आपने भेजा है क्या? Yes, sir, I've sent. अच्छा, यू हैव सेंट इट ऑलरेडी। आपने जो सवाल किया हमने इसका आंसर दिया था कि नहीं? Sorry, sir, can you repeat what you said? नो, इन द चैट ना आपने सवाल पूछा हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेट्स लेबल्ड एज एसेशन रीजन, बोथ ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर फिक्स्ड। ये शायद हमने बता दिया था ना, क्लास में बताया था, राइट? हाँ, Yes, ये sir. क्लास में बताया था, ये क्लास में बताया था। तो आपने क्वेश्चन पेपर कहाँ, अच्छा भेजा क्वेश्चन पेपर क्या? ये क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर कहाँ भेजा, किसको भेजा आपने? Sir, I sent it to the Learnivio. You have sent it to Learnivio? Sir, if you want, I can forward it to you. हाँ, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड। अरे भाई साहब, ये सेम सेम क्वेश्चन पेपर लग रहा है बिल्कुल, जैनब और साइमा का। पहला सवाल देखिए, जैनब एंड साइमा आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहला सवाल है जैनब के पेपर में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और साइमा के में है थर्ड स्टेशनरी स्टेट। उसके बाद है मोलर मास ऑफ CH3COH। इनका है मोलर मास ऑफ CH3CHO। उसके बाद है अजर्शन रीजन। इसमें ठीक है भाई, सॉरी। सेम स्कूल में जाते हैं आप लोग? ओ हाँ, सेम स्कूल, लेकिन सवाल डिफरेंट है। अच्छा, सेट वन सेट टू है, ओके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैंने नाम ही भेजा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो आप लोग दोनों की देखिए, शायद तो काफी अच्छे मार्क्स आए, और जैनब आपके ही मार्क्स सही आए, मतलब ज्यादा ये नहीं है। हाँ, विद सेम टाइप, सही है, सही। काफी आप लोग मतलब स्कूल अच्छा है आप लोग का फिर तो, टाइम है ना? हाँ, Yes, sir. स्कूल तो अच्छा है फिर आप लोग का। मतलब पढ़ाई लिखाई होती है वहां पे, ऐसा नहीं कि मतलब बस टाइम पास हो रहा है। मतलब इंटेंट दिखता है क्वेश्चन पेपर में, लाइक हाउ दे हैव फ्रेम द क्वेश्चन, उन लोगों ने ख्याल रखा है कि नहीं, दैट व्हाट आर द थिंग्स यूजफुल, वो सब चीज आप लोग को याद रहे, है ना, वो सब चीजों को टेस्ट किया जाए, जो आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में काम आएंगी या फिर आगे के चैप्टर्स में काम आएंगी। पढ़ाई होती है ठीक से?
टीचर्स अच्छे हैं, जैनब एंड शाइमा? Yes, sir, they are good. Yes, दे आर sir. गुड ना? चलिए, चलिए, अच्छा भाई, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि स्कूल्स में आपके ना अच्छे टीचर्स मिले। चलिए, मूविंग ऑन। आज हमारा जो चैप्टर है ना, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली चैप्टर का नाम है। एंड शॉर्ट में इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है ना, दिस कंप्लीट चैप्टर इसके नाम से जाना जाएगा, पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आपके पास जो पहला पोर्शन है ना, दैट इज द जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल का जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ था सर, ये 28 मतलब दैट्स नॉट रियली। देखिए, टीचर तो कोई कोई होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं भी हो ना, पहली बार में भी बहुत अच्छा पढ़ाने लगते हैं, लेकिन और कोई टीचर होते हैं, मतलब कोई और टीचर भी होगा शायद आपके स्कूल में जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिर भी उनको उस एक्सपीरियंस से कुछ हासिल नहीं हुआ। राइट, देयर मे बी सम स्टूडेंट्स, जो बेटा जसलीन और सबिया के स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होंगे, आप लोग के भी स्कूल में हो सकते हैं, जिनको एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है, उनकी एज बहुत ज्यादा है, बट वो उनको नॉलेज भी होता है। टीचर जनरली अगर होते हैं तो उनको नॉलेज भी होता है, वो टीचिंग एबिलिटीज कहीं कहीं पे ना मार खा जाती है। चलिए, बिकॉज वो स्किल सेट थोड़ा दूसरा है टीचिंग के अंदर ना। हम लोग स्टार्ट चैप्टर का नाम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ध्यान दीजिएगा। नाउ द फर्स्ट, सबसे पहली जो यहाँ पे अटेम्प्ट थी, द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय डॉबरनियर। ठीक है, नंबर वन, डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, तो व्हाट डिड ही से? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें, आप मतलब ये सजाने की बात है बस हम, लाइक द वे यू अरेंज योर रैक विल बी डिफरेंट देन व्हाट योर सिस्टर और ब्रदर इज, हाउ दे आर अरेंजिंग द रैक। तो वही एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका है। अब मेनी पीपल दे हैव डिफरेंट कंसेप्ट्स अबाउट हाउ टू अरेंज द एलिमेंट्स, हाउ टू अरेंज द एलिमेंट्स सो दैट इट इज यूजफुल फॉर देम, है ना। तो डॉबरनियर ने क्या कहा था? ठीक है, he observed that atomic weight, he observed that atomic weight of middle element, his arithmetic mean, his arithmetic mean of other two elements, of other two elements which are arranged, which are arranged such that elements having elements having similar properties, similar properties are placed in increasing order of atomic weight, increasing order of atomic weight. ठीक है, now what Daubernier saw was, let's
सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव सोडियम, ठीक है, या फिर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। लिथियम व्हेन ही रिएक्ट विद लिथियम विद क्लोरीन, देन one lithium reacts with one chlorine, one sodium reacts with one chlorine, one potassium reacts with one chlorine. We saw that these elements they are having similar chemical properties, right? ये ऑब्जर्वेशन है। हाउ कैन दे ऑब्जर्व, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। So all of these three, beryllium, magnesium and calcium, they will react with two chlorine, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ओके फाइन, these elements are having similar properties, so इसको अरेंज कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट, now what they saw was that if they arrange them in ascending order of masses, जैसे मान लीजिए आपके पास A, B and C elements है, ठीक है, and these elements they are having similar weights, sorry similar chemical properties, और वेट का ऐसा कुछ ऑर्डर है, ठीक है, एटॉमिक वेट सी का ज्यादा, बी का कम, उसके बाद फिर ए का। एंड इफ यू अरेंज इट लाइक दिस ए बी एंड सी, तो फिर क्या देखा गया, मास ऑफ, है ना, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस बी, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी, इसको अगर दो से डिवाइड कर, बी नहीं मैं बात सी, इन दोनों को अगर दो से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको क्या मिल रहा था, मास ऑफ बी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है बस, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, होना ही होना है, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपके पास, ये बताते हैं हम आपको, जैसे कि लिथियम, ठीक है, 7 होता है इसका, सोडियम 23 होता है इसका, और उसके बाद पोटेशियम 39 होता है। देखिए 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताइए, 39 प्लस 7 46, 46/2 23, दिख रहा है सबको, हाँ है ना। तो इट इज फॉलोइंग द डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, मेक सेंस, क्या ख्याल है बताइए। जो पिता जस्मीन, साइमा, जैनब, सभी हाँ, तो क्या हो जाएगा, सभी चली जाती है। Tell me guys, you understood this part ना? If you arrange these elements, now there at that time there were very few elements also, ना, ये भी ध्यान रखिएगा, make sense? Yes. ठीक है, और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, कुछ एग्जांपल से, जैसे ये एग्जांपल तो बिल्कुल आपको याद रखना है, दैट लिनक्स इट फॉलोज डॉबर्नियर ट्रायड, है ना। और आपके पास है फॉर एग्जांपल, आपके पास इस सीक्वेंस में ऐसे लिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, कैल्शियम है, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, दे फॉलो द डॉबर्नियर ट्रायड, और उसके बाद आपके पास है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज फॉलो डॉबर्नियर ट्रायड। और आपके पास है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज फॉलो, and then sulfur, selenium and tellurium, these also follow Carbonier triad. पर लिखिएगा लिमिटेशन, ऑब्वियसली ये सब कुछ तो फॉलो नहीं करेगा, सारे लोग नहीं फॉलो करेंगे, लिमिटेशन लिखिएगा, sum of the triads, sum of the triads at all three elements possessing nearly same atomic mass, nearly same atomic mass, ठीक है। तो ये दिक्कत आई किस वजह से, देखिए ये दिक्कत आई इस वजह से, बिकॉज उन्होंने देखा लिथियम एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेरिलियम या फिर मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर आप ऑप्शन को भी देखेंगे तो ऑप्शन भी दो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ओ Cl2 ऐसा कुछ बनेगा, है ना, तो क्लोरीन का ऑक्साइड जो बनेगा, राइट। लेकिन बट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दीज आर नॉट सिमिलर इन, दे आर नॉट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज मैग्नीशियम इज मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। बट डोबनियर हैड अ थॉट कि एटॉमिक मास ऊपर और नीचे का ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या होना चाहिए, बीच वाले का आना चाहिए, तो उन्होंने ना जबरदस्ती बहुत सारे एलिमेंट्स को लगा दिया, है। एक लिमिटेशन ये थी। अब जबरदस्ती लगाने की वजह से क्या होगा ना, मान लीजिए अगर ए बी और सी है, ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए 20 है, इसका 19 है और इसका 21 है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 20 और 21 का हाफ, मतलब उनको दोनों का ऐड करके हाफ करें तो 19 ही मिलेगा, या फिर 20 और 21 ही, 21, 20 और 18, 20, 21 और 22,
ठीक है, तो बीच में आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, राइट। अब देखिए सर, एक ये लिमिटेशन थी, अनदर लिमिटेशन वाज इट वाज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग नोन एलिमेंट्स। उस टाइम के जो नोन एलिमेंट्स थे उनमें भी ये एग्जिस्टिंग नोन एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं था। ये तो दिस इज जस्ट अ थॉट ना, इस थॉट को आपको याद रखना है कि ट्रायड्स ने क्या सोचा, उसने सोचा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया जाए, तो जो फर्स्ट और लास्ट का मास होगा, जो बीच का मास होगा, दैट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। बस ये थॉट याद रखिए। डन एवरीवन, यस और नो, प्लीज टेल मी। वेटिंग फॉर शाइमा, जसलीन एंड जोबिता। शाइमा, जसलीन एंड जोबिता। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड जो अटेम्प्ट था दैट वाज फ्रॉम न्यूलैंड। कहा जाता है न्यूलैंड ऑफ स्टेट। तो ऐसे लिखो, न्यूलैंड लॉ, लॉ ऑफ स्टेट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑफ स्टेट। ठीक है, और न्यूलैंड व्हाट ही ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन है बस, है ना, ऐसा कुछ रूल नहीं है। क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic weights, the properties of every eighth element, the properties of every eighth element, every eighth element were similar to the first one, were similar to the first one। ठीक है, तो ऑक्टेव जो होता है ना, इट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव इज बिकॉज आठवें पे आ रहा है, ठीक है, एंड ही वाज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय द धुन, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट इन इंग्लिश। जब होता है ना, सा रे गा मा पा दा नी, फिर क्या आता है, बोलो कैसा था, सा रे गा मा पा धा नी, आगे कुछ नहीं, जैसे बोल, सा, है ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर एक क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, सही है ना, तो यहीं से इंस्पायर था उनका। बट मतलब इंग्लिश में कुछ और होता है, इंग्लिश वाला किसी को पता है क्या होता है, डो रे माला ऐसे करके कुछ होता है शायद, नहीं, क्या होता बताते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। In English, it is a bit different. उत रे मी फा सो ला सी, ये ऐसे है शायद, इसमें कुछ और भी होता है, डोरेमा भी होता है कुछ शायद। हाँ, डो रे मी, है ना, उनको पता है बहुत। जैनब को क्या होता है, जैनब थोड़ा बताइएगा। Sir, I डो just know रे only मी three. फा सो ला सी दो। अच्छा, Yes, हाँ तो sir. ये होता है, डो रे मी फा सो ला सी दो, सो ला So, सी तो पता नहीं क्या बोलते, ठीक है ना, फिर इससे डो आ जाता है ना, वैसे ही रबाब, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, खैर हम लोग को क्या करना है, ठीक है, बेसिकली
1 2 3 4 5 6 7 फिर वापस से 8 आ जाए। नाउ व्हाट ही अरेंज एट दैट टाइम, व्हाट वाज नोन, उसकी को उन्होंने अरेंज किया, है ना। एटॉमिक मास पता रहता था सब चीजों की, एटॉमिक नंबर एट दैट टाइम देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर बिकॉज़ एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड न्यूक्लियस के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं, एटॉमिक मास के बारे में चीजों का आइडिया था। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन उस टाइम पता ही नहीं था किसी को। व्हाई नियॉन वाज नॉट नोन, बिकॉज़ नियॉन इज इनर्ट, वो रिएक्शन तो शो नहीं करता है, एंड एट दैट टाइम द कंप्लीट केमिस्ट्री वाज बेस्ड ऑन रिएक्शन। ठीक है, अभी भी रिएक्शन है, बट एट दैट टाइम इफ एनीथिंग इज नॉट रिएक्टिंग तो उसका डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट था। तो क्लोरीन के बाद सीधा क्या मिला था उनको, सोडियम, फिर मिला मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, वापस से मिला उनको पोटेशियम, राइट, एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग विद बेरिलियम ना, तो बेरिलियम के बाद एक एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये एट हो गया मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज बोल रहे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द एट एलिमेंट, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस वाज द लॉ ऑफ एट, दैट एट एलिमेंट अगर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए एटॉमिक वेट्स को, तो एट एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। मेक सेंस? कैसे टीचर मी? ठीक है, सबिहा आप बताइए जरा, क्या हुआ, नेट नहीं सही चल रहा है क्या आपका? यस सबिहा। सबिहा, हाँ जी सर, थोड़ा वीक है मेरा नेटवर्क। तो कब ठीक होगा ये? लास्ट क्लास में भी ऐसे ही हुआ था ना आपके साथ, आप बीच में चले गए थे, राइट, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सर कैन यू रिपीट? इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो यू गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। हाँ सर, मैं अभी इंडिया में हूँ ना, तो मेरा सही नहीं है इंटरनेट बिल्कुल भी। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वगैरह देखिए आप फिर, है ना, ठीक है। देखिए अगर इंटरनेट हाँ सही नहीं हाँ है ना सर, तो देख रही व्हाट, हूँ। देख रहे हैं ना, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लिमिटेशन लिखिएगा, प्लीज राइट दिस में लिमिटेशन नंबर वन, ओनली हेल्ड ट्रू फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट मतलब हल्के, है ना, विथ लेस एटॉमिक मास, लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास less than 14, that is up to calcium, up to calcium. Next point, elements that were discovered later, बाद में जो डिस्कवर did not follow the law, है ना, जो हेवियर एलिमेंट्स है उन लोगों ने उस लॉ को फॉलो नहीं किया। इट्स एवरीवन डन? यहाँ तक किसी आप लोगों ने, तो आगे बढ़े हम लोग। We will write the Mendeleev's periodic table. We will discuss about Mendeleev's periodic table. जैनब का हुआ है अभी, waiting for others. वीजा कभी हो गया यार, हाथ अगर रेस कर सकते ना, इफ ऑन लैपटॉप इट्स वेरी इजी टू रेस हैंड, ऑल्ट वाई,
है ना, फिर हम भूल जाते हैं इसमें किस किस का हुआ है। Shaima, just waiting for Shaima, I guess. Shaima, just waiting for you. ठीक है, अगला लिखिए। Mendeleev's periodic table. I'm writing with blue ना। Third, Mendeleev's periodic table। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Now this Mendeleev's periodic table, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने लॉजिक वगैरह लगाया था। एंड ऑल्सो वन मोर, देखिए अगर आपके पास घर में बस एक बेड है, रूम में बस एक बेड है, तो क्या ही सजाइएगा उसको, है ना। सजाने को तब होगा ना व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक आपके पास बेड है, फिर कारपेट आया, फिर उसके बाद ड्रेसिंग टेबल भी है, फिर उसके बाद कुछ पोर्ट्रेट्स है ना, कुछ मतलब वो जो दीवार में लटकाने के लिए होता है, तस्वीरें हैं, है ना, फिर कुछ आईने, है ना, वी हैव सम मिरर्स। देन और क्या होता है सजाने के लिए, एक टेबल है जिसमें टेबल में आपने कुछ मतलब कहीं पे शोकेस है। यू हैव कबर्ड, कबर्ड में एक वॉश, एक वेस रखने का जगह है, वेस बोलते हैं, वॉश वॉश बोलते हैं ना, वॉश रखने का जगह है, ठीक है। when you will have things, then only you will be able to arrange it. मेंटली के साथ एक तो फायदा ये था, that one advantage that he had was he had a lot of elements to think about, he had a lot of elements to arrange, है ना, he had a lot of experimental data also, है ना। like न्यूटन, you must have heard of न्यूटन, and न्यूटन के जो ना एक बहुत फेमस कोट है कि I am standing in the shoulder of giants। मतलब न्यूटन का जो भी काम है ना, यू आर लर्निंग इन 11th स्टैंडर्ड इन फिजिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। फिर उसके बाद न्यूटन वाज द वन हु हैज गिवन द लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स आल्सो। प्रिज्म हो गया, मिरर हो गया, उसमें भी न्यूटन का ही काम, राइट। न्यूटन से पहले जनरली सोच नहीं पाता आदमी कि कौन इतना फिजिक्स में किया था, बट ही इज आल्सो सेइंग आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स, लाइक दैट मींस ही हैज स्टडीड अ फ्यू वर्क्स, है ना, एंड उनके शोल्डर पे वो खड़ा है। So similarly, Mendeleev was also standing in the shoulder of giants like Newland or Octave, इनमें कुछ contribution था, कुछ data था। Like there were many experiments done at that time, many elements were known, and कुछ ऐसी भी properties अब पता चल गई थी, for example metallic, non-metallic, right? So these things Mendeleev know, but still we did not know about atomic number at that time. उस हिसाब से the contribution of Mendeleev is kind of genius. क्यों genius है? तो धीरे-धीरे देखेंगे। He also like he systematically gave laws and everything. He said that. Please write this with me. The physical and chemical properties. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. Of their atomic weights. Meaning, when elements are arranged elements are arranged in order of their increasing atomic weights. Increasing atomic weights elements with similar properties repeat after certain regular intervals। ठीक है, ये तो लॉ है, मेंडलीव का लॉ है, लॉ
दी periodicity law for from Mendeleev है ना, Mendeleev का ये लॉ है ना, Mendeleev's periodic law. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. मतलब क्या है? That means when elements are arranged in the order of increasing atomic weights with similar properties, then what will happen? Elements with similar properties, they will repeat after certain regular interval. Here, like Newland, he did not say after 7 या after 8. He said that after regular interval वो क्या करेंगे? Repeat करेंगे. ठीक है ना? अब उन्होंने एक बनाया था periodic table. ठीक है? And in periodic table he had, please write, Mendeleev Mendeleev's Mendeleev's periodic table consisted of, सबसे पहली चीज थी उसमें क्या, 7 horizontal 7 horizontal rows called periods. Second, 8 vertical columns. 8 vertical columns. C columns हो जाएगा, COLOUMNS ना, हाँ, columns called rows. इनको rows कहा जाता है. तो यही सेम चीज जो है ना आपके पास, मतलब वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है. ठीक है, सेम चीज है, रोज एंड रोज, जिनको क्या, एक सेकंड भाई, 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड रोज. रोज को मैं याद था ग्रुप ऑफ, एक कंफ्यूज हो गया. इट शुड बी कॉल्ड ग्रुप्स. ग्रुप्स होगा, रोज नहीं, ग्रुप्स होगा. ग्रुप्स है, रोज कैसा होगा, नहीं ग्रुप्स होगा ना. पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ये सेम टर्मिनोलॉजी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यूज किया जाता है. ठीक है, उसके बाद द जीनियस ऑफ मेंडलीव वाज, इज राइट, मेंडलीव लेफ्ट vacant, many vacant spaces, left many vacant spaces in his periodic table. In his periodic table, showing those elements will be discovered later. Will be discovered later in future. ठीक है, will be discovered later in future. जैसे कि उन्होंने जो कुछ छोड़ा था, ये आपको बताते हैं. For example, he left, आई थिंक जर्मेनियम, उन्होंने जर्मेनियम जो है ना, जर्मेनियम के बाद वाला उन्होंने छोड़ा था. हाँ, जर्मेनियम थोड़ा था मैंने. तो मेंडलीव ही लेफ्ट गैप, एल्यूमिनियम के बाद उन्होंने छोड़ दिया एक स्पेस. ठीक है, उन्होंने बोला एल्यूमिनियम के बाद
उन्होंने स्पेस छोड़ दिया बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड एनी एलिमेंट एट दैट टाइम विच वाज any element which was similar to the similar to the properties of aluminium and its mass was nearby aluminium also. ऐसा कुछ उनको मिला नहीं. ठीक है. So what he did, he left the space below aluminium. उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से सिमिलर होगी एंड व्हाट विल हैपन, एंड वहां पे जो एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो इतना होगा. फाइन. सेम उन्होंने किसके लिए किया था आफ्टर ऑल्सो सिलिकन. सिलिकन के बाद में उन्होंने स्पेस छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा उसको नाम दिया था. ही आल्सो नेम दोस एलिमेंट्स दैट एल्यूमिनियम के बाद जो आएगा ना उसको एका एल्यूमिनियम बोला. एका मतलब होता है सेम. एका एल्यूमिनियम दैट सिमिलर टू एल्यूमिनियम. सिमिलरली सिलिकन के नीचे उन्होंने छोड़ा. ठीक है. और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एका एल्यूमिनियम, सॉरी एका सिलिकन आएगा. फाइन. सो राइट लाइक दिस. कौन हो रहा है? जस्टीन. जस्टीन दो जस्टीन. मेंडली left space below aluminium and called and said that element will be discovered later and named the element Eka aluminium. Yeah. And similarly below silicon and named it Eka silicon. क्या नाम दिया? Eka silicon. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे लिखेगा इनके लिमिटेशंस. Number one, position of hydrogen. Position of hydrogen, lanthanides and actinides were not correct. Second point, anomalous pair. This is sure. Anomalous pairs of elements were together. ठीक है. बट एट दैट टाइम दे वर नॉट anomalous. मतलब the elements और ऊपर करना है क्या? More up. जैनब, ये इतना काफी है जैनब. Yes, sir. Is it fine? Yes, sir. इन 3 पॉइंट्स में से if there is an explanation needed then बताइएगा. Some similar elements were placed in different groups.
हो गया सबका? Anomalous pairs of elements were together का मतलब ये है elements which did not really have same properties, they were also together in the group, and sometimes some similar elements they were present in different groups, है ना? मतलब arrangement बहुत ज्यादा सही नहीं थी, है ना? Whatever knowledge we had, whatever experimental data we had, उसके हिसाब से सही था, but later on we found new data, तो उसके हिसाब से सही नहीं था. चलिए देखिए लिमिटेशन के बारे में ना, प्लीज रिमेंबर वन थिंग दैट when Mendeleev gave the periodic table, when Mendeleev gave his theory, उसी वक्त उसने limitation नहीं दे दिया, ठीक है? Limitations was found is always found out later on whenever you analyze something. जब when you have new results, whatever result Mendeleev had, according to those results, the periodic table was fine. But when new results came, which did not follow what Mendeleev's periodic table had, तब कहेंगे ना वो limitation हो गया उसका, है ना? इस चीज के बारे में नहीं था, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन. अगला है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नंबर वन है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर atomic numbers of their atomic numbers. Meaning, meaning when elements are arranged in increasing order of their atomic number, the elements with similar properties, the elements with similar properties are repeated after certain interval. After certain interval. Okay, hope that is self-explanatory. It's very similar to the Mendeleev's periodic law, but here we have the periodic function of their atomic numbers. The atomic number पे depend करता है, atomic weight पे नहीं. And please write cause of periodicity. Cause of periodicity क्या है? Please write. It is due to repetition of similar outer electronic configuration after
certain regular interval. After certain regular interval. Copy this down. Raise your hand if you're done. So Anna, आपको समझिएगा later on slowly you will understand this because when you have similar electronic configuration and outer electronic configuration if it is same then what happens the reactions are same. तो वही उसी की वजह से like for example sodium can also lose one electron, lithium can also lose one electron, potassium can also lose one electron. That loss of one electron leads to reactivity. इसी तरह से chlorine can lose one electron, chlorine will gain one electron, chlorine will gain one electron, bromine will gain one electron. So that is why their chemical properties are also similar. ठीक है, बिकॉज वहां पे सबने क्या करना है, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सिमिलरली बेमक्का सर बड़ा, दैट मींस वी विल टॉक अबाउट दैट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू लूज टू इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, these are going to gain two electron. So that is a loss of electron, gain of electron. Now it depends on what? It depends on the outer electronic configuration. Fine. This loss of electron and gain of electron configuration. We will understand that. नेक्स्ट आप लिखिएगा यहाँ पे. होपफुली एवरीवन इज डन. जसलीन, सबिहा, शाइमा, जैनब, जुबिता, हो गया सबका? Anyone still writing? Please let me know. Anyone still writing? Please let me know. No one is writing. ठीक, सवाल लिखिएगा. सवाल बोल रहे, सॉरी. मॉडर्न periodic table. देखिए, it consists of 7 horizontal rows, called periods. देखिएगा, it consists of 18 vertical columns. ये होता है स्पेलिंग कॉलम्स का. ऐसा होता है क्या? भूल गया. क्या होता है स्पेलिंग? MNS ये होता है. ये होता है. ये नहीं होता. हाँ, ये नहीं होता. कॉलम्स LMNS है ना. 18 vertical columns called groups. Called groups. Right? It is further divided into four different blocks. Four different blocks. कौन से? मैं देखिए, नंबर 1 है आपके पास एस ब्लॉक, है ना, जिसमें क्या क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. उसके बाद है आपके पास पी ब्लॉक, इसमें आते हैं आपके पास ग्रुप नंबर 13 से 18.
Then we have the D block, जिसमें आपके पास आते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके 12. Then we have the F block, फोर्थ में आपके पास है F block. The complete F block, it is in group 3 itself, है ना, ग्रुप 3 में ही इसको माना जाता है, right? Raise your hand if you're done. और वाला क्या लिखा? हाँ, डी ब्लॉक, सॉरी बी ब्लॉक लिख दिया हमने, डी ब्लॉक बोला था हमने, लिख दिया ना, कुछ तो सही बोलेंगे हम, या तो सही बोलेंगे या तो लिखेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक, नॉट बी ब्लॉक, डी ब्लॉक. यस, आई एम करेक्ट. नेक्स्ट लिखिएगा, सम लिमिटेशंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, ऐसा नहीं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज सम लिमिटेशन टू इट, है ना, लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो आपके पास जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है आपके पास, दैट देयर इज नो प्लेस फिक्स्ड फॉर हाइड्रोजन, नो फिक्स्ड प्लेस फॉर हाइड्रोजन as it shows, sorry, sure, I can scroll up, as it shows properties similar to that of alkali metals and halogens. alkali metals बेसिकली क्या है, ग्रुप 1 है ना, उसको लिख देते हैं alkali metals. तो ये ग्रुप 1 की तरह भी है, it shows properties similar to group 1 and halogens also. जो ग्रुप नंबर किसमें है, 17, ग्रुप नंबर 17, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, बिकॉज देखिए हाइड्रोजन, देख इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, H बन जाता है और हाइड्राइड भी होता है. जसलीन हो गया आपका, जसलीन, जसलीन आर यू डन? Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखिएगा. अब बस दूसरा मेजर यहाँ पे डिफिकल्टी है ना, दैट इज लैंथेनॉइड्स, F block elements basically, F block elements are written separately
rather placed separately. उनके लिए दे डोंट बिलोंग टू द मेन पीरियोडिक टेबल, उनको अलग से रखा गया है, ठीक है। उनके लिए मतलब अभी कोई जगह बनी नहीं है, राइट, उनके लिए कोई अभी जगह बनी नहीं है। अगला स्टेज क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ना, आइसोटोप्स के बारे में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट आइसोटोप्स। इसके बाद जो आपके पास ना काफी इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर। प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर, पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर। अब प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर ये हम कराएंगे अगले हफ्ते, है ना। कब कराएंगे, ट्यूसडे को कराएंगे भाई, बिकॉज दिस टॉपिक इट इज मतलब वो एक साथ ही पूरा खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक नाउ गिव यू द फॉर्मूलाज एंड आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, बट फिर ट्यूसडे आते आते फिर भूल जाएगा, तो वापस से बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हम ऐसे 15 मिनट पहले खत्म करें क्लास को। देयर इज अ टेक्स्ट व्हिच विल बी एक्टिवेटेड इन लाइक 15 मिनट्स, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया था, इज एवरीवन डन राइटिंग लिमिटेशन, जसलीन, सबीहा,